Namaskar, Jai Gurudev, and welcome to today's session, Granthapalika session. Today's topic is must-have books for the Kathak researcher or dancer. And today I decided that I'm not going to get all the syllabus-oriented books for all of you. I'm going to talk about those books which are in our library. This is the library. You can see the books, and then there are more and more and more. So, the ALAP Nrityadarpana Foundation Library was founded because we wanted to share whatever we had with a lot of people. And we are based in Dadar, and all of you are welcome. Please, after the session, do give your feedback if you like, if you have questions, queries, connect with me on WhatsApp or connect with Sunil and mail us. So, let me start like this. That there are a few books which I feel that everybody should have. When do you read it? Do you read it at the beginning of your Kathak journey? Do you read it at somewhere in between the Kathak journey? Do you read it at, like, you become parangat आप हो गए हैं और उसके बाद उस किताब को आप उतारे हैं. So it all depends on you, how deep you want to be involved in the Shastra or the theory of Kathak. But I think I'll start with the fountainhead, the Natya Shastra. The Natya Shastra is a must-have book for every Kathak dancer or researcher. And even in Natya Shastra, there are various translations. Like in my library, I have this whole complete Natya Shastra right on the 5th ladder here. All the translations. But then there are my favorites again. So let me start with my favorite. My favorite is the Hindi translation of the Natya Shastra. And this particular Hindi translation has been published by Chaukamba Sanskrit Sansthan, and the Sampadak is Shri Babulal Shukla Shastri. There are four volumes of this book. Let me show you. This is the cover page. Okay, so you have first, you have second, third, and 4 volumes of this book. And believe me, phenomenal. The work that this person has done is phenomenal. You can't beat this. So, why do I like it? Well, I have very fond memories of buying it on a very rainy day. I've written here 11/12/90. And I bought it from a book fair in Mumbai. Now, there are no book fairs in Mumbai, but that time I bought it from a book fair in Mumbai. So, chapters 1 to 7 is in the first part. What is important about this book is that before even you start the translation, you start reading the translation here, you need to go and read the Prastavana. The foreword is the best part of this book. You don't even have to go and read it, you don't have time and you're going to write a paper and you want things very fast. Like here he talks about Natya Shastra का विशेष विषय. So he talks कि नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में भारत मुनि के आत्रेय आदि ऋषियों द्वारा नाट्यवेद के विषयों में जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किए गए. So he talks about the 5 questions primarily, and then he talks about the नाट्योत्पत्ति की कथा. So on and so forth, and it's so well written, and he has collated so much of knowledge that I think this is a must-have in your library. Also, all these 4 volumes have the tippanis. Now, this is for further researchers. Like you have questions coming up, these are the trick questions. What is a Shat Daruka? So for that, you should read this tippani. Jarjara. He writes here. So these little notes that he has written is very important. He writes Jarjara here. He writes Shaddartha. Then he has written about Mattavari. See, look at the Mattavari. यद्यपि मूल में पार्श्व वद एक वचन में प्रयुक्त किया गया है, परंतु किसी विशेष पार्श्व का ग्रहण न होने के कारण एवं अगली कारिका में उत्सेवेन तयोस्तुल्ययम में तयोः पद के द्विवचन द्वारा दोनों बाजुओं में मत्तवारिणी का निर्माण करने की प्रतीति अवादित रूप से होती है. Now he is giving you the etymology of the word as well. So these notes are very important. You can look, you can see how many markings I've made. I've kept on marking and marking because I find this very interesting. And he has taken from other books also. He has talked about Kumari Godavari Ketkar ने मत्तवारिणी शब्दों को अशुद्ध माना है. So you have other writers also collated. What are their views? What did they write about Mattavarini? He's talked about Dr. Manmohan Ghosh. He has talked about Pracharya D.R. Mankad. मत्तवारिणी का आकार वरांडा मानते हैं.
क्लियर वहाँ पे बोलते हैं. सो जयशंकर प्रसाद जी का भी उन्होंने लिखा है, सुब्बा राव ने लिखा है नाट्य मंडल, श्री राव ने लिखा है. सो दिस इज लाइक a must have. This is a gem of a book. 4 volumes, exhaustive knowledge. Now you may ask, when do I read this? Do I read it when I start dancing? No, you don't have to. Like in Bharata College, we have something called the just diploma, like pre-graduation, post, not BA, but just before that. So there you have a shortcut on the Natya Shastra. You just go to the forward, take this if you're writing the paper in Hindi, and you get all the chapter names. So that's enough. That's enough on that stage. Now after this, I'm going to talk about the English translation. The English translation this is my favorite again. There are other translations you can see here. This is by Dr. Manmohan Ghosh. We have got it in our library. Okay, all the volumes are with us. But my favorite, this I got from Lucknow. Again on the September reading, I got for a dance performance, Lachumara Janmotsav. And I had only that much money, and he gave me a very good discount at Hazratganj, I remember. So this book has been translated, Natya Shastra of Bharat Muni, translated by Professor Pushpendra Kumar. But he also includes the text commentary of Abhinava Bharati by Abhinav Guptacharya and English translation. He does not translate the Abhinav Bharati. He only translates the Natya Shastra shlokas. Here also, why we need this book is, there is an introduction, yes. He talks about when it was written, the primary text, the editions, everything. All of it comes. Acharya Abhinav Gupta, art of staging, mudras, music. But the best part about this book is the summary of the chapters. This is too good. Excellent work. And of course, chapter translations. I love this book because it's very simple. Very, very simple. Very straightforward. And you know, when he writes here, he writes down, like, they are very interesting. That is very interesting. He's also talking about other texts, what they have written or how they have deciphered it. You know? So, like, let me see if I can Nrityadarpana-ALAP Kathak again. Here he writes, like, what are the ceremony of laying the foundation and which are the musical instruments. So down he writes, Dundubi, a kind of drum, Panava, small drum or tagore, Pasanda, derived originally from Parsada, means assembly or community. So all this, and he has also said that it will give rise to Ashtokam Pasanda, the 7th pillar edict to Delhi Topra. Okay, so he is also relating it to archaeological evidences which he has been finding. Shramana means naked Jain monks. Kasaya Vasana means Kashaya robe of dark red color, such people being Buddhist monks. I think this is a must. This should be there in the library. And I know it's heavy and there are 3 volumes, but do read. It will help you. Now I need to talk about the other people who work. Dr. Brajwalla Mishra has been working on the NS from I don't know how many years, and he's an expert. What I do have in my library is this. This is a small thing that you can read, small book, Granthapalika by Dr. Brajwalla Mishra. I would highly recommend this. It will give you a very different perspective, and he's really worked well. And then 2 more books on the Natya Shastra. Dr. Sandhya Purecha's Marathi translation. This is the Khanda Pahila, Adhyay 1 ते 12, Marathi अनुवाद, पदच्छेद आणि अन्वयासह. So what Sandhya Tai has done is basically she has made it very simple for students. She has worked with Srihari sir, Srihari Gopala sir, who was also visiting faculty in our college, and he would take a lot of. So you can see that the font, the way. So when she takes a shloka, she writes the padacheda, she writes the anvaya, and then she writes the arth. Like instead she talks about the Ranga Shirsha. So she is writing Ranga Shirsha, स्वच्छ आरशाच्या पृष्ठभागाप्रमाणे समतल असेल तर अधिक प्रशंसीय ठरते. या ठिकाणी बुद्धिमान लोकांनी अनेक रत्न आयुधे लावल्या, पूर्व दिशेला वज्र ठेवावे. It's as simple as that. I think our whole focus is that it should reach the student of dance, and this is also a good book, and we have all the volumes. And one book that I want to mention is
डॉक्टर पूर्णिमा जी, ददीप जी वी ऑल नो, गुरुजी ने बहुत काम किया है और उन्होंने ये जो लिखा है नाट्यशास्त्र का संगीत विवेचन, शायद लोगों को पता नहीं है, लेकिन इसमें एक नर्मदा अध्याय है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शायद लोग ये खरीद नहीं रहे या खरीद के रख रहे हैं और वो सोच नहीं रहे, लेकिन मेरा कहना होगा कि अगर आप कथक डांसर है तो पहले आप ये सब गुण दोष विवेचन अध्याय वगैरह है, मतलब संगीत पे नहीं है, लेकिन नृत्य अध्याय करके पूरा है इसमें, वो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। और मैं यहाँ से वही पढ़ती रहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने वो सारा नृत्य अध्याय में बहुत शॉर्ट में और लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हिंदी में, और ये बहुत काम की चीज़ है। तो आई थिंक दैट इज फॉर नाट्यशास्त्र। ओके, नमस्कार। एंड आफ्टर नाट्यशास्त्र we come to Abhinay Darpan. Now, in terms of time, these granthas have been written over a period of time. There is a lot of time gap between the two. But for a Kathak dancer, if you want to start off reading any grantha, I think you should start reading the Abhinay Darpan first. Now, in my library, I have Abhinay Darpan, the whole series here, and different translations. But I have a few favorites, and one of my favorites is भारतीय नाट्य परंपरा और अभिनय दर्पण बाय वाचस्पति गरोला। ये भी मैंने लखनऊ से ही लिया था, शायद अमीनाबाद की किताब गली से ली थी मैंने। और आफ्टर दैट आई हैव नॉट गॉट दिस ऑनलाइन, वी ट्राइड टू गेट an other copy. I wanted to read about वाचस्पति गरोला, who he was. He is an enigma. बट चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान का ही ये पब्लिकेशन है, एंड इट इज पब्लिश्ड इन 2006. But I somehow could not manage to get any other copies. Now, why this is so important is that वाचस्पति गरोला जी ये पीछे की तरफ सारा देते हैं अभिनय दर्पण का ट्रांसलेशन, लेकिन प्रथम वो शुरू कहाँ से करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपको कहा जाता है कि तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी कीजिए अभिनय दर्पण और नाट्यशास्त्र में, तब ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट आती है, क्योंकि उनका चैप्टर देखिए, नाट्य साहित्य, दूसरा नाट्य उत्पत्ति। तो नाट्य उत्पत्ति में भी वो कहीं ना कहीं दोनों का वर्णन करते हैं। नाट्य उत्पत्ति की कथा वहाँ पे और एनएस में और एडी। नाट्य विधान, तो यहाँ पे वो नाट्यशाला, तांडव और लास्य, तांडव नृत्य के भेद, लास्य नृत्य, सारा कुछ लिखते हैं। नाट्य परंपरा, नाट्य उत्कर्ष में वो साहित्य लाते हैं, और वैदिक युग में नृत्य कला, अष्टाध्यायी में नाट्य कला, रामायण महाभारत में नाट्य कला, अर्थशास्त्र में नाट्य कला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य प्रयोग पे वो लाते हैं अभिनय पे, उसके बाद वो आते हैं अभिनय दर्पण, और यही उसकी उनकी खूबसूरती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे उन्होंने नाट्य कला की आधारभूत सामग्री नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ पे काम किया। मींस ही हैज वर्कड विद बुक्स दैट आर नॉट अवेलेबल, बट these texts were written, and ये परवर्ती मतलब नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ जिसको कहेंगे, उसी समय या उसके बाद या उसके पहले लिखी हुई, और उनके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। जैसे कि कोवल का हमें मिलता है कि नाम है कोवल प्रदर्शिका, और कहाँ से उसका नाम आता है, अभिनव भारती में, जिनके रचयिता है अभिनव गुप्त जी। तुम्बरु का नाम आता है, अज्ञात है, लेकिन संगीत रत्नाकर में आता है, जिन्होंने शारंगदेव ने लिखा है। इस तरह से उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो उन्होंने बनाया है पूरा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाट्य शास्त्र का रचना काल के ऊपर उन्होंने बहुत सारा काम किया है, एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट हाउ पीपल हैव डेटेड द नाट्य शास्त्र इन डिफरेंट वेज। लाइक कन्हैयालाल पोदार हैज स्टेटेड कि वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल तक है। हरप्रसाद शास्त्री ने 200 ईसा पूर्व लिखा है। काणी जी ने ईसवी सन के पूर्व से लेकर कालिदास के समय तक डेटिंग कर रहे हैं। मनमोहन घोष, बी केत, मैकडोनल्ड, सुशील कुमार के, एंड वी हैव दिस बुक. This is out of print. I have not seen it anywhere. कहीं पे भी मैंने ये किताब नहीं देखी है। And for instance, if you even go to नाट्य उत्पत्ति की कथा, he first gives नाट्य शास्त्र में नाट्य उत्पत्ति की कथा, then he goes to आचार्य धनंजय के दश रूपक से जो रेफरेंस है, उसके बाद नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, वहां से वो देते हैं, फिर अभिनय दर्पण लाते हैं। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। भारतीय नाट्य परंपरा और अभिनय, वो ये कहते हैं कि अभिनय दर्पण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और वो पढ़नी चाहिए, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, टू कम टू दिस अभिनय दर्पण की
he's putting a lot of material before it, and this book is with us. I need to get it covered post lockdown, but this is a very precious book to me, and I keep on going back to it, back and forth. And Vachaspati Garola is an enigma for all of us. I've tried searching for him, tried reading about him, but nothing is available. And this unheard of people who worked their lives, who worked all their life to get these things to us. I think we need to respect them and read them and invite them. That is the best tribute we can give to them. When it comes to Abhinay Darpan, let me go to another book, which I feel every Kathak dancer should have. And that is the Kathak Darpan by Dr. Paullumi Bishwanath. Rohini was a brilliant performer, mentor, teacher, and this is a ABGMV Mandal Prakashan. So many people who don't know that what Gandharva Mahavidyalaya did, this was actually published by them. I got this at Vashi. Center. और उन्होंने जो हम कहते हैं टेक्स्ट टू प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, वो उन्होंने काम किया है. मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं जब सी these are like the eyes तो दृष्टि भेद में इस तरह से है. फिर अगर हम हर एक में उन्होंने लिखा है, मतलब ये देखिए, she has used photos of live performances to explain गति भेद, चारी भेद, सारी चीजों का उन्होंने एक कहीं ना कहीं she has made it a focus that yes we are using it and you can relate it to Abhinay Darpan, but we don't know that it is from Abhinay Darpan, and that is the gap that she has filled up in this book. I love this book immensely and I'm very I stick on to it. Also her भूमिका, जो उनके पीछे के पॉइंट्स है, जैसे वो किंकिणी लक्षणम पे लिखती है, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ने में कि किंकिणी लक्षण में कहते कि रस्सी को ना, जो जिसमें रस्सी बांधी जाती है वो नील धागे में बांधना चाहिए. तो उनका इंटरप्रिटेशन है इस पे. तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो मैंने आई टॉक टू पीपल एंड आई टॉक टू माय ब्रदर एट दैट पॉइंट व्हेन आई वाज रीडिंग अभिनय दर्पण. आई सेड ये नील क्यों? तो नील इज इंडिगो एंड इंडिगो इज एन एंटीसेप्टिक एंड एन एस्ट्रिंजेंट एंड दैट इज हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ व्हेन यू टाई द घुंघरू ऑन द लेग्स. लेकिन यहाँ पे इनका इंटरप्रिटेशन आप देखिए, बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है हमने. घुंघरू को नील धागे में ही बांधने की सूचना ग्रंथकारों ने क्यों दी है, यह बात इधर स्पष्ट नहीं हो पाई है. एक तर्क ऐसा है कि भारतीय संस्कृति में सभी बातों के पीछे एक दैवी अधिष्ठान होता है. ये मानने की एक परंपरा है. उस हिसाब से घुंघरू के अधिष्ठाता देवता आकाशस्थ नक्षत्र है, अर्थात आसमान की नीलिमा के साथ शोभायमान हो ऐसे नीले रंग के धागे में घुंघरू बांधने की पद्धति के रूढ़ होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है. दूसरा उन्होंने लिखा है कि ये मतलब उन्होंने चमड़े पे ना बोला है, और दूसरा वो लिखते हैं कि किंकिणी लक्षण में शिव जी जो है वो महान है, वो सबसे ऊंचे है भगवान, और इसीलिए वो क्योंकि वो नील कलर है, तो मतलब her perspective is so different and yet so beautiful, so this is how she writes. She writes on प्रार्थना, she writes on नटन क्रम, she writes on अभिनय, देवहस्त है. बहुत अच्छी तरह से उनकी जो नोट्स है वो पढ़ने लायक है. सो आई थिंक दे शुड बी देयर. कथक दर्पण दीपिका by Dr. Paullumi Bishwanath. I don't know whether it is in publication, but I have not seen it. And to close the trio of Abhinay Darpan, yes. Dr. Purudharij again to the rescue. And you can see a very pretty Vibhaji doing the Darpini. Darpini is one of the Sura Sundaris. And a very young Vibhaji again on the back cover here. So she was the muse, obviously. यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि गुरुजी ने सारे जितने अभिनय दर्पण के श्लोक हैं वो उन्होंने ट्रांसलेट किया है. इनका भी फॉर्मेट बहुत बढ़िया है, ये पढ़ना ही चाहिए. और नमस्ते श्लोक को जैसे उन्होंने हम सभी जानते हैं, अंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाग्मयम आहार्यम चंद्रतारादि तम नुमा सात्विक. इन्होंने इन वर्स मतलब इन दैट सेम रिदम आंगिक अभिनय है जिनका सारा संसार और वाचिक अभिनय समग्र वाणी व्यवहार,
चांद सितारे आदि जिनका है आहार्य, उन सात्विक शिव जी को प्रणाम है बारंबार. I think this is a must read and you must have, because it makes life so much easier if you read it in Hindi and then go back to the Sanskrit shloka. I found it. I did that. I've done it personally, and we have performed on it. And even on his birthday, I wished him with some of the shlokas from here. So to complete the try of Nrityadarpana, this is a must read and a must have. And Sangeet Ratnakar. So I'll just close the Grantha section with Sangeet Ratnakar. There was nothing on Sangeet Ratnakar, but my teacher and my principal, Parvati Amma, was going to Chennai, and my brother requested her to get some books from the ALAP Library bookshop. So she got the Sangeet Ratnakar of Sarandev, translated by Dr. K. Kunjumi Raja and Radha Bharti. And this is the book. The original shlokas are not there, but this is a translation, and this is one of the best translations. This is only the Nartanatya of Sangeet Ratnakar, and I think you should read this. It is, you might find the English a little this, but please understand they were working at that point. So, but this book should be read in the proper, you need to keep the Sangeet Ratnakar and then you need to read this, then it will make sense to you. But I think this is a must have for every Kathak dancer too, because there is a lot of Kathak in the Nartanatya, in Sangeet Ratnakar. So that completes my Grantha section. Okay, now the third segment of today's Granthapalika series. I'm going to talk about a few books which I discovered later. And these are ancillary books, I would call them. They are not related to the syllabus, but they enrich us. You understand the depth to which they have gone, and they have studied the form, and somehow they help us in enriching our knowledge of Kathak as well. So this was a book that I discovered in the NCPA library, and it's called the Nrityadarpana-ALAP Kathak, Pratham Bhag by Bhagwan Das Mridangacharya. It's a Hathras publication. Hathras has done a lot of yeoman work over the centuries for dance, music and others. There are two parts to this. So the second one, Mridang Tabla Pratham ka dusra bhag, the lekhak is Bhagwan Das Mridangacharya, who was the guru, and Ram Shankar Das Pagal Das. So Ram Shankar Das Pagal Das, a lot of people know. Again a Hathras publication. And why are these books important? When I had read this book in the NCPA library, and I was thinking, what is a Tal Dhyana? ये Tal Dhyan क्या होता है? So it was his approach, he would meditate, and then these lines would be revealed to him. So every Tal has been given divine qualities or worldly qualities, and there's an anthropomorphism to it. So, but they're very interesting, and then I and Sunil presented a research paper on the same as well later on. I'll just show you what he writes about. He writes about teen tal. Okay, let me do the teen tal, which is very simple. Rakta varna pitambar kanana kundala sobhi shatatiya sanga virajata danda sukar manmoto. Shatatiya sanga virajata. आस पास सहचरी चांबरले मृदु हलरावे देव यक्ष गंधर्व किन्नरादिक गुण गावे पूर्ण करत मन कामना उज्ज्वल कीर्ति ललाम आदि ताल के पद कमल सादर करत प्रणाम. So this is a tal dhyan of teen tal, and he calls it the Adi tal. Again we find this reference with the Karnataka tal paddhati. It's called Adi tal, and 4 matra 4 matra chalta hai same. So very similar. But this book, whether it is the Pratham Bhag or the Dvitiya Bhag, is a must-have for every Kathak dancer. You will see a lot of parallels and a lot of tips that he keeps on giving on how to approach every tal. So he's also got a forehead. फॉरवर्ड जो है उनका, जो उसमें उन्होंने लिखा है पड़ंत के शब्द और बजंत के शब्द. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पड़ंत में वो कहते हैं कृधान या प्रधान है, लेकिन बजंत में उसको किट धा करना है. कृधा किट या प्रधा किट है, लेकिन बजंत में किट धा किट करना है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है. इससे हमें हमारे गुरुजी ने या मेरे गुरु ने भी मुझे कहा कि जो तबले या पखावज पे बजता है वो कैसे होता है. तो शायद ये आपके काम में आ जाए.
ये must have दोनों किताबें. These are the auxiliary books, but I think it's a must have. These are the two books. Okay. So when we come to Tal, one book that is very interesting to me is The Tabla of Lucknow by James Gibbon. What a phenomenal book. And when we talk about Tabla of Lucknow, his approach is so good. It's so stupendous, the amount of work that he has done, if you can understand it. So he just doesn't start from the tabla. He talks about the Lucknow, the history, the culture, the history of music, All India Radio, Doordarshan Kendra, the Tamayaf, the social relationship जो मिरासी होते हैं वो क्या होते हैं, उनके घराना कैसे बनता है, genealogical perspective, the घराना system of training and the college system, Lucknow tabla technique, and he has done genealogy of Delhi घराना, Kuthiwal घराना, Lucknow घराना, and also the Nawabs of Powhatan. So he's really done great work, and I think everybody should have, because even as a Kathak researcher, I take a lot of references from his book, and I find it very interesting. He's gone and he's read Umrao Jan Ada by Mirza Ruswaisa, maybe the greatest novel in the Urdu language. So he talks about even the Sahitya of Lucknow, what was being written and how it influenced the tabla playing. और मैं उस घराने के लोगों को भी जानती हूँ, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने उनके साथ बैठ के like and I just read this out. This is very important because people keep on asking me what is a chilla. An important method of organizing one riyaz is the chilla. Newman describes a chilla as literally a discipline which is undertaken for 40 days without a break. A vow that one assumes to concentrate on whatever one is desirous of achieving. Specifically, chilla refers to a spiritual discipline in which a person recites the same prayers each day at the same time and in the same place. Okay. And I've heard of numerous accounts of how chillas have failed on the 39th day owing to some unavoidable mishap. So Afaq Hussain has talked about him कि ये हम चिल्ला करते थे और मैंने भी चिल्ला किया. तो these are his little stories and anecdotes. बहुत मजा आता है सुनने में. चिल्ला क्या होता है उसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया. रियाज कब होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्या वो इबादत होनी चाहिए, क्या वो प्रार्थना की तरफ होना चाहिए, क्या उसको तपस समझना चाहिए. ये जो अप्रोचेस है, यानी इज वर्क विद द ट्रेडिशनल आफाक हुसैन जी के घर के लोगों से मैं बात की है. सो दिस इज अ मस्ट हैव, एंड वी हैव गॉट इट इन द लाइब्रेरी. यू आर फ्री टू कम इन एंड वॉच एंड रीड दिस बुक. Then we have okay, auxiliary books. Dancing Thumri by Prajesh Banerjee. I feel you should read this book because, well, it's so wondrous to understand how Thumri has grown and what does it mean, the etymology. We have all read about the etymology of Thumri, but he goes in deeper into it, and Lucknow style of Thumri क्या है, Banaras style क्या है, और then he has talked about Naika Bhed in this. He's giving Abhinay in Thumri. So how do you he's worked with Shambhu Maharaj on this book also, so you can understand कि किस तरह से उसको ठुमरी को इंटरप्रेट करना कथक, ये वो यहाँ पे देते हैं. I'll just go to one of the pieces where this is a rare book, it's not available. उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह की कुछ कंपोजिशंस यहाँ लिख के दिए हैं. तो जब अली के नाम से वो लिखते थे, जब छोड़ चले लखनऊ नगरी तब हाले अली पर क्या गुजरी, महल महल में बेगम रोवे जब हम गुजरे दुनिया गुजरी. These are the lines. When I'm bidding adieu to the city, after that what happened to Ali recently, then in every mansion each begum is away. तो इस तरह की उन्होंने जो चीज़ें दी है, निरंतर ढंग यहाँ पे दिया है, वृंदावन की कॉम्पोजिशंस दी है, आवे लचक लचक ब्रजनारी. So this is a must have because these are rare compositions. So you will find them everywhere. So this one book that you need to visit is Swinging Syllables by Dr. S. K. Saxena. I have met Dr. Saxena many years back and I have an interview with him. It is not easy to understand what work he has done, but I think I should have this book. तो लैंग्वेज ऑफ कथक में वो बहुत क्लियरली जिस ढंग से उसको एनालाइज करते हैं, वो एक अलग ही ढंग है. मतलब
उनका जो तरीका है वो एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव है. ही टॉक्स अबाउट एस्थेटिक्स इन कथक एंड देन ही डिवाइड्स इट कि आमद कैसी होनी चाहिए और वो क्यों होना चाहिए. तो ये एक ऐसी किताब है जिसको आपको शायद पहली बार पढ़ के नहीं समझ में आता. ये मैं आपको टिप दे रही हूँ. But you need to read and go back. क्योंकि what is Kathak, he writes about it right in the beginning. And he himself puts this very clearly. He says a book of this kind has to be opened quite simply. It is, I believe, the first detailed study of the subject, and so I cannot assume, as I set out, that the way I plan to follow in this work will seem familiar to many. Yes, this is unfamiliar territory, but I feel that every Kathak dancer should have this book. It's a SMA publication, and he's done tremendous work. I respect this person a lot. I've interviewed him. Very gentle person, and this is the kind of work we need to do. I look up on a lot. Okay, so we are done with the ancillary books for the time being. Okay. Now we come to the fourth and the last segment of Granthapalika today. And what I'm going to do is I'm going to do fast a run through of the books that are needed. They're not in the syllabus, but they are done with a lot of passion. Just names, okay? Just names. Now we're running out of time. So this is Dr. Vibha Dadich's PhD book. And the name is Bharatiya Nritya Ki Varnamala Hasthamudra. And it's a must have. It's a must have because हस्तमुद्राएं अगर आपको पढ़नी है, अगर जैसे मैंने मेरे एमए कथक में डिसर्टेशन किया था कंपैरेटिव स्टडी ऑफ हस्तमुद्रा इन नाट्य शास्त्र एंड अभिनय तत्व. And this was the book I kept on referring to, other than the original text also. I was referring to the source text. But I think इतना extensive work शायद हस्तमुद्रा में किसी कथक गुरु ने नहीं किया है, विभाजी ने किया है. And it's there in our this. So असंयुक्त हस्त अभिनय, हस्तमुद्रा का स्वरूप, संयुक्त या नाट्य शास्त्र उत्तर ग्रंथों में वर्णित संयुक्त हस्तमुद्रा. मतलब ये ना एक अपने आप में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है. सारा मेहनत उन्होंने कर ही दिया है बस. और तंत्र में भी हस्तमुद्राओं का क्या प्रयोग है वो भी उन्होंने काम किया. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. मेरा ये मतलब मैं आई समटाइम्स गो टू स्लीप रीडिंग दिस, यू नो. आई लव दिस. एंड उन्होंने योगा की हस्तमुद्राओं के लिए काम किया, जैसे सुरभि मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वैराग्य मुद्रा, जब के टाइम पे क्या करना है. तो बहुत बढ़िया काम. आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव. सो आई जस्ट डू अ फास्ट रन. ओके, नाउ वी हैव दलीप जी एंड गुरु जी, विभा जी एंड. वैसे तो उनके सिलेबस ओरिएंटेड सारी किताब आपको पता ही है, बट ये जो नृत्य नवन है, this is one easy reading book which I go and refer to many times. It is in Hindi. They have done essays on dance और उनके टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं. जैसे अगर आप देखते हैं कुछ विभा जी ने लिखे हैं, कुछ गुरु जी ने लिखे हैं. तो नाट्य का स्वरूप, नृत्य, एक शास्त्रीय विवेचन. मेरे लिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है पेरनी. मुझे बहुत अच्छी लगती है पेरनी. विभा जी ने उस पर काम किया है. और मुझे दलीप जी का, गुरु जी का जो अच्छा लगता है वो कथक और पुरुषत्व है, ये किताब. उसके बाद मुझे जो पसंद है वो ध्रुवपद की नृत्य परंपरा, कालिदास काव्य में नृत्य तत्व. हाँ, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इनमें, एक ऐसे लिखा है पूरे दलित जी ने लिखा है. 3 से विभाजित होने वाली मात्रा संख्या की तालों में चक्करदार बोलों का प्रश्न. बहुत बढ़िया. उसके बाद लास्ट में उन्होंने थोड़े से लाइफ स्टोरीज लिखी है, जैसे शंभू महाराज पे एक है, स्मृति के झरोखों में गुरुवर पंडित सिद्धू महाराज और कला और सौंदर्य. But I think this is a must have. You must read this. You can see how many times I've made markings and other side में. हाँ, इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में संगीत और नृत्य, ये एक छोटा सा चैप्टर है. You must go through this. This is excellent. बहुत अच्छे से कोलैब किया है मैंने इन्फॉर्मेशन. ये एक है. So here we are. This is it. अच्छा, everybody knows Kathak Gyaneshwari of Pandit Tirathram Azad, and I have memories of seeing him in Aradanda in Gopik ji's house. He used to come where he used to wear a muffler. काफी ओल्ड थे और वो एक कॉर्नर में बैठ के गोपी जी से प्रश्नोत्तरी करते रहते थे, फिर अपने नोट्स बनाते थे.
फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में वो बैठे रहते थे, काम करते रहते। तो आई मेट हिम पर्सनली, मैंने प्रणाम वनाम किया था. Too small to understand what his contribution is, but before the Kathak Ganeshwari, Kathak Darpan, and this is a rare book, you're not getting it print. उनके लड़के से शायद मिल जाए. इसके आप पेजेस देख सकते हैं, बहुत ही ये हो गए हैं. मेरी मम्मी ने खरीदा था ये जाके मुझसे, उनके हस्त में लिखा था ये मुखर्जी. सो बहुत ही प्रेशियस बुक है ये मेरा. उन्होंने सिलेबस ओरिएंटेड तो लिखा है, लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया बात ये उन्होंने ये जो किया है, दिस इज अ पिक्टोरल जर्नी. किस तरह से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं. ये दादर के रेसिडेंस में महाराज जी ठुमरी भाव दिखा रहे हैं, लक्ष्मी महाराज जी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं. तो ये पिक्टोरियल जर्नी भी आपको मिलती है. ये सितारा जी, आप कॉस्ट्यूम देखिए, सितारा जी का तांडव पद भाव दिखाता है. टिमिटी टिमिटी डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाची बोल. यहाँ पे जटायु, one of the most famous pieces of Gopi ji. I don't know, I have not seen this. I had watched this on Doordarshan as well as live. मैंने उनको दिखाया. तो ये जो पिक्टोरियल उन्होंने फोटोज लिए, these are archive महाराज जी का माखन चोर. क्या देखिए कैसे ले रहे हैं, क्या देखिए तो किस तरह से, मतलब क्या बहुत बहुत अद्भुत ये है. यहाँ पे कृष्ण कुमार जी का है. आई हैव हार्डली सीन एनीथिंग ऑफ महाराज कृष्ण कुमार अवेलेबल इन द आर्काइव्स. सबदिन होतना एक समान बहुत फेमस गाना है, सबदिन होतना एक समान, और ये बहुत लोग करते हैं. तो इस तरह से उन्होंने उमा शर्मा जी का लिया है. उन्होंने रानी करना जी का रानी करना जो भी गुजर गई है, उनका नायक भेद. So you see very young dancers. शकुंतला नायर में नॉट. प्रताप जी का भी है, प्रगटे ब्रजनंदला द सेकंड्स यहाँ पे है. और आई थिंक कपिला का भी है शायद. उर्मिला नागर मुझे दिख रही है, माधवी मौदगल्य दिख रही है, और कपिला मौसी का है, कपिला राज जी का है, यहाँ सुनैना जी का है. सो ये किताब इज अ मस्ट हैव. इट्स अ लेबर ऑफ लव. When there was nothing available, this was my ticket to theory for my Visharad exams, which I gave many years, and this really built out me. One of the best written pieces or chapters is Tal Ke Dashpan. Always take Tal Ke Dashpan from this book. This is before Kathak Ganeshwari. Everybody has Kathak Ganeshwari, but this is out of print, I feel. Kathak Darpan is the name of the book, and it's available in our library. You're welcome. Okay, now I'm going to go to 2-3 books, many books actually. Many books. महाराज जी की चीज़ें, अंग का लाइफ टाइम इंटरप्रिटेशन. I love the drawings. I love every photo that I look at. His interpretation, how he is interpreted. And this forms the syllabus of Kalashram also, I think. But I have it because every time मुझे खूबसूरत बहुत अच्छा लगता है उनका पद भूमिमा. और उन्होंने जो नाम दिए हैं ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ही. तो we refer to the Granthas. I think this is a book Anga ka one must have. And this is in print. We also have it here. Maharaj ji का और एक काम रसगुंजन. In Rasgunjan, he is giving photographs of all the artists which have worked with him, and also his group and everything. तो उन्होंने उसको ना इस तरह से ये किया. ठुमरी भजन है, ठुमरी है, दादरा, होली, झूला, साधारण भजन. सबसे मजे की बात ये है कि इसको नायिका भेद में भी थोड़ा बहुत ये किया है. सबसे बेस्ट पार्ट इसका है नोटेशन. आपको अगर म्यूजिशियन ऐसे मिलते हैं, कभी कभी हमें उनको हमारी रेpertoire नहीं मालूम होती. आपने ये किताब पकड़ा कि आपको बोलना है कि भैया इस नोटेशन से तुम गाओ, काम बहुत आसान हो जाता है. एंड दिस इज मस्ट हैव बुक फॉर दिस इज आर्काइव ऑल द साहित्य, not all, some of it at least is archived, and I think one should have this book. ये महाराज जी की किताब है. Okay, 2 books from Majidari's quote, Bunny and Nasu. Very difficult to understand. My thing is that I had seen it in a glass case in Lucknow Kathak, the old Lucknow Kathak, where I was doing Riyaz.
फॉर व्हेन आई वाज डूइंग द रिहर्सल्स फॉर अ प्रोग्राम एंड लक्ष्मी महाराज जी जहाँ तालीम देते थे, पुराना लखनऊ का था। और मैंने ये ग्लास केस में देखा, मैंने और ना उस समय कोई फोटो कुछ नहीं था, मैंने उसको नोट डाउन किया। फिर अमीनाबाद की किताबी गलियों में मैंने बहुत ढूंढा और मुझे ये शुक्ला बुक टिप मिला और लोगों ने मुझे बहुत हंसे कि क्या तुम ले रहे हो, लेकिन दिस इज अ कलेक्टर्स आइटम। आई थिंक एवरीबडी शुड हैव इट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, लेकिन इसमें गतों की चाल है, जो उनकी इजाद रही है वो सारे हैं। तो आई थिंक ये ट्रांसलेशन जो है ये अभी भी वो है योगेश करी जी, लखनऊ के हैं, साहित्यिक है और बहुत ही जानकार आदमी है, बहुत ही जानकार है। sat down with him in various seminars in Lucknow and I talked to him. बहुत बढ़िया उन्होंने देखिए रुबाई दी है, गजल दी है और इसमें आपको सारा मटेरियल मिलेगा जो अगर आपको रिक्रिएट करना है लखनऊ का देश। तो ये दो किताबें हमारे लाइब्रेरी में हैं। और हाँ, चेतना ज्योतिषी का नायिका भेदिन कथक, वेरी एक्सटेंसिव and the best part is that when I talk about नायिका भेद, she is not restricting to one ग्रंथ। उन्होंने नाट्य शास्त्र ले लिया, उसके बाद रीतिकालीन तक पहुंचने के पहले she has gone to the अग्नि पुराण, she has gone to different texts like काव्य अलंकार, दशरूपक, नाट्यदर्पण, रसमंजरी, साहित्य दर्पण, उज्ज्वला नीलामणि, then she comes into literature. So this is very good. And then she goes into traditional Kathak, नायिका भेद in traditional Kathak. तो ये आपको बहुत ही यूजफुल होगा अगर आपको नायिका भेद एज अ रिसर्च टॉपिक आगे भी लेना है या कोई कोरियोग्राफ करना है। दिस इज हायर लेवल बुक, यस तो दिस इज हायर लेवल, लेकिन आप पढ़ तो सकते हो। उसके बाद उसको आई थिंक यू नीड दिस टू इंटरप्रेट द वेरियस मोड्स ऑफ अ वुमेन, यू नो। जस्ट नायिका भेद हम अष्टनायिका करके छोड़ देते नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ है। वो दलित जी ने भी अपनी किताब में पूरा चार्ट बनाया है, चार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये दिस इज इन इंग्लिश बट यू कैन ऑलवेज ट्रांसलेट इट। तो ये चेतना ज्योतिषी, डॉक्टर चेतना ज्योतिषी की किताब है। ओके, नाउ आई कम टू मालवी दीदी की किताब, डॉक्टर मालवी सिंह, भारतीय संस्कृति में कथक परंपरा। लक्ष्मी महाराज जी की भी ऊपर किताब लिखी है, लेकिन ये बहुत सिंपल, very easy to understand for students. And she was Dr. P.D. Ashirvadan ji's student, and she knows what is authentic and what is fake. तो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की वैसी है और आई थिंक ये एक किताब होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल उन्होंने शब्दावली यूज की है। मंजीरी ताई की किताबें शायद महाराष्ट्र और मूल अराउंड